Welcome, Saima. Your voice is breaking. Your voice is breaking. But a very, very good evening to all, to you and all the viewers. And connectivity का थोड़ा सा issue रहेगा. We have been trying our level best. So if you are not able to hear me और कुछ होगा तो please bear with us. थोड़ा सा मसला हो रहा है. We have been trying our level best to इसको हम लेके चलें on air because it has been postponed for the longest, and so today we thought कि we'll just go ahead with whatever time or however the connectivity is, so we will. So please bear with us. I am Sangeeta Perwani and my mentor is with me, Saima here, जिनकी अभी तक मुझे आवाज सही clearly नहीं आ रही है. I hope you are able to actually hear her, at least if not me. So yeah, today's topic is about mindfulness. ठीक है जी. What is mindfulness? हम objective की तरफ जाएंगे. Saima, if you can hear me, can you just turn the slide? Next, thank you. Let's go through the objectives first. This is what we are going to be talking about. अब जब हम mindfulness की बात करते हैं, it's you have so much to talk about from so many perspectives. But what I have, because my experience has been with early years, teaching and then counseling the teachers, then training them, and with parents. So I have tried कि मैं उस scenario में रख के बात करूं because I think I am better able to talk about those things because वो experiences हैं मेरे पास, to relate and to make sense of them. क्योंकि बात तो हम बहुत सारी चीजों पे कर सकते हैं, but हर चीज में आप expert नहीं होते हैं. Though saying this, I don't mean that I'm an expert on it, but however, I have that kind of an experience because mindfulness is actually experiential. ठीक है, जब तक आप mindfulness को experience नहीं करेंगे, there is no way to teach you mindfulness. ठीक है जी, तो हम चल रहे हैं अब अपनी this is what we are going to talk about. Yes, I always say that a picture is better than 1,000 words. I think this is what we are going to talk about. And this makes such an impact on me that when I was preparing this workshop for my teachers, this is something that made कि अगर मैं सिर्फ ये लगा दूं, a lot of people will be able to relate to this scenario and the state of mind everybody has nowadays. हर किसी के आप देख लें, दो चीजें हैं. हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा तो दे दिया गया है, मगर हम अपने आप को ही बहुत अंडर प्ले करते हैं, बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी चीजों को, बिकॉज वी कॉन्स्टेंटली आर कंपेयरिंग ourselves with others. और उसका रिजल्ट क्या होता है कि फोकस हमारा दूसरों पे जाता है और हम अपने पे फोकस नहीं कर पाते हैं, और उसका रिजल्ट है दिस क्लटर्ड माइंड, द पिक्चर दैट इज शोन ओवर देयर. और उस चीज का इफेक्ट हमारी काफी चीजों पे, स्पेशली क्लोज रिलेशनशिप्स पे बहुत ज्यादा होता है. बी इट a parent-child relation, be it a teacher-child relation, be it a spouse, husband and wife, or wife or husband, vice versa. Anyway, so this is what happens. And mindfulness is actually, this is what mindfulness teaches us about, that we have to be in the present moment. और वो present moment is, it means right now, right here. So इस वक्त अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो देयर इज नथिंग इन माई माइंड कि जी सब्जी तरकारी चढ़ा के मैं इधर बैठी हूँ और मैं खाना, और मुझे टेंशन ये है कि ये कब खत्म हो और मैं जाऊं. ठीक है जी. सो आई थिंक वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट विल मेक मोर सेंस. So activity 1, like I said, activity 1 slide. Saima, it's not okay, we'll wait. I think it's not changed. लेकिन मैं आपको जब तक साइमा वो चेंज करें, ये थोड़ा सा मसला हो रहा है. आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट आई हैव हियर, दैट इट्स अ ब्रीदिंग टेक्निक. व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 20 seconds. ठीक है जी, आप अपनी आंखें बंद करेंगे एंड देयर आर can we change the slide to the second one, Saima? The
एक्सपीरियंसिंग माइंडफुलनेस एक्टिविटी, उनकी उसकी टेक्निक्स बताई गई हैं हाउ टू डू दैट. So like first you are going to just relax and sit in a posture which you are most comfortable with. Even if you want to lie down, just lie down. Even if you, जो भी posture आपके लिए comfortable है, where you, in which you relax more, आप वैसे हो जाएं. And then just relax, okay? एंड आप अपनी फोकस को, जब आप आंख बंद करेंगे, अपने फोकस को आप अपनी बॉडी और अपनी ब्रीदिंग पे लेके जाएंगे. ठीक है जी. आई थिंक दैट्स वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. You close your eyes, okay? Bring your focus towards your body and concentrate on your breathing. Your time starts now. All right, now slowly open your eyes. I know most of you must have been, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा कि आंख खोले ही ना वापस, right? It happens when you are relaxing in that mode and totally in a relaxed this thing, you know, your mind is totally relaxed. आपका दिल चाहता है कि आंखें खुले ही ना, and you can just go on and on and on. But however, we have a short time, so we won't do that. If some of you liked what you just felt, do it. लेकिन अब आपकी रिफ्लेक्शन का टाइम है. ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू नाउ एज वेल, but I won't be able to take all the answers. I'm sure Saima will be able to see if you are answering. She will be able to see. तो वो मुझे जरूर बता देंगी, and I will say अगर नहीं तो please just keep listening to what I have to say, because अभी भी connectivity का कुछ issue है. So what was that like for you? What did you notice? ये सबसे पहले आपको अपने आप से सवाल करना है, जिस वक्त आपने आईज बंद की और उस 20 सेकेंड्स में आपने क्या एक्सपीरियंस किया. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट अपॉन. सेकंड, वाज इट डिफिकल्ट और वाज इट इजी? ओके, सो सेकंड, वाज दिस एक्सपीरियंस इन माइंड? With this experience in mind, why do you think mindfulness has recently risen so rapidly in popularity? Why? So these are the three questions that you really, each one of you, whoever is with us, who could join, can practice and see what it is. अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आप में से अगर हमें 10 लोगों ने ज्वाइन किया है, तो out of 10, 9 would have had a terrible time focusing. वही चीज जो मैंने इन बिटवीन, जब मैंने स्टार्ट किया था, आपसे कहा था कि ज्यादातर लोगों के साथ ये हुआ होगा, व्हेन यू शट योर आईज, वो 20 मिनट्स आप 20 सेकंड्स आपको लगे होंगे इटर्निटी, लाइक, और दिमाग आपका यूं यूं गया होगा. दैट्स कॉल्ड वंडरिंग माइंड. दिस इज अ प्रूवन फैक्ट. ये रिसर्च है बहुत, उस पे एक टेड टॉक है जिसका लिंक, इफ वी कुड, साइमा, आई डोंट नो इफ यू कैन यू नॉट, सो दैट आई नो दैट. Okay, so the thing is, इसका link अगर possible हुआ, I'll share it with you. Please watch this TED Talk. ये research proven fact है that our mind keeps on wandering. अगर अभी मैं आपको इसका example दूं, तो simply देखें, जब आपने अपनी आंख बंद की उस 20 seconds में, I am sure कुछ लोगों को वो 20 seconds eternity लग रहे होंगे. कुछ लोगों के दिमाग में अगर उनके खाना किचन में वो आ रहा होगा, कुछ लोगों के काम जो ऑफिस गोइंग हैं, टीचर्स हैं, मदर्स हैं, या तो बच्चे हैं, या तो हस्बैंड, उनके ख्याल आ रहे होंगे. दिस इज व्हाट इट डज. आवर माइंड प्लेज विद अस, एंड दैट्स व्हाई आवर थॉट्स टेक चार्ज ऑफ अस रादर देन अस टेकिंग कंट्रोल ऑफ आवर थॉट्स. तो ये जो डिफरेंस है कि थॉट्स हमारे ऊपर हावी हो या हम अपनी थॉट्स के हावी हो, उसकी ट्रेनिंग इज ऑल mindfulness is about. And it's so simple. It's as simple as shutting your eyes just for 5. Initially you can do it with just 5 minutes, not more than that. Whenever, जरूरी नहीं है कि आप सुबह सवेरे उठ के करें, जिसके लिए जो टाइम कन्वीनियंट है, लेकिन वो 5 मिनट अपने लिए दें, जिस वक्त आप कुछ ना सोचें सिवाय इसके कि आपकी ब्रीदिंग और आपके अपने वजूद पे आपका कंसंट्रेशन हो. Okay, so this is how long it takes to train your mind.
Mindfulness is exactly for the mind what gym is to the body. So आप mindfulness को gym for your mind भी कह सकते हैं. हम अपनी बॉडी का इतना ख्याल रखते हैं, मगर हम अपने माइंड का कितना ख्याल रखते हैं, जबकि दिस इज द वन दैट वी आर यूजिंग कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे. ठीक है जी. सो लेट्स टर्न ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. I think it's slide number 7. So we are just quickly going through that slide and you can read what is mindfulness in a nutshell. Okay. Second, can we have the next slide, Saima? Yeah, this is the one. Just go through it. So it is a state of awareness. जब तक हम अपने आप पे काम नहीं करेंगे, एक्चुअली हमारी इक्वेशन ही सारी रॉन्ग है, हमारा फॉर्मूला रॉन्ग है. वी स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. जबकि अगर आपको सक्सेसफुल होना इन योर रिलेशनशिप्स, इन एनीथिंग दैट यू डू, इट हैज टू बी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. सो फर्स्ट स्टेप इज कि आप पहले अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें. डोंट गिव योर रिमोट कंट्रोल टू समबडी एल्स, बिकॉज दैट्स नॉट, it will always have a, it will always backfire. और आप मोस्टली देखें सिचुएशंस में होता क्या है, वो सिचुएशंस में हम होते क्या हैं, कम्युनिकेशन होती क्या है, और ज्यादातर उसके फ्लॉस क्या हैं. हम सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं ना अपने, इसमें एक बड़ा जबरदस्त कोट है दैट आई हैड जस्ट व्हेन आई वाज टेकिंग दिस अभी थोड़ी देर पहले, आई जस्ट सॉ एंड इट्स अमेजिंग एंड इट्स वेरी रेलेवेंट टू द टुडेज टॉपिक, दैट द ग्रेटेस्ट मिस्टेक वी मेक इन रिलेशनशिप्स, we listen half, understand quarter, think zero, and react double. This is applicable to any situation, be it parent to a child, teacher to a student, husband to wife, or vice versa. So to make our relationship beautiful, it is very, very important कि पहले हम अपना ख्याल रखें, और जब हम अपने आप से खुश होंगे, अपने इमोशंस पे हमारा कंट्रोल होगा, हम कर सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल, प्लीज लेट्स टेक एन एग्जांपल, बिकॉज जस्ट टॉकिंग वोंट हेल्प. लाइक आई सेड इन द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस टॉक एंड द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ, दैट ये जो चीजें होती हैं ये एक्सपेरिंशियल होती हैं. अगर आप इसको सिर्फ इस चीज से रिलेट करें कि जब हम बहुत थके हुए आते हैं, ठीक है, ऑफिस का स्ट्रेस लेके घर पे पहुंचे, आपका बच्चा जो सुबह से आपका वेट कर रहा था कि आज मैं पापा को बताऊंगा या मामा को बताऊंगा व्हाट आई डिड इन द होल डे, and the minute you enter and he or she is like coming to you, towards you, very excited and telling you wanting to share something that she or he has achieved, होता क्या है, क्योंकि आप इतना इमोशनली ड्रेन होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी जस्ट इग्नोर, या हम फौरन से कर देते हैं, एकदम से इरप्ट होता है इमोशंस का कि अभी नहीं, लेट मी रेस्ट, आई हैव जस्ट एंटर्ड, दिस इज हाउ वी रिएक्ट, जस्ट बिकॉज आवर माइंड इज सो फुल, like we saw in that picture, right? So full of everything that is, hum chhodte nahi, we don't let go. So we have to switch on and switch off. Situations will always be challenging. How we choose to respond or react will make a difference in our relationship and anything else. तो वो जो हम choices करते हैं वो करते हैं. Let's not play a victim. कोई अगर मुझसे ये आज कहे, because this is something that I experienced in my own life, you cannot say कि किसी ने मुझसे बुरे तरीके से बात की तो मैंने वही जवाब दिया. Again I will say, we are the ones, God has blessed us with this mind and the discrimination and the sense of discrimination, right? तो वो अशरफुल मखलूकात का हमें दर्जा इसलिए मिला है कि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, वो पावर हमारे पास है, कोई हमें उकसा नहीं सकता. ये गलत ये मिथ है कि किसी ने उकसाया और हम हो गए, राइट? द चॉइस इज आवर्स. How we choose to respond or react is always within our control. However, because of the situation and the way we are, क्योंकि हमने हर चीज को अपने हिसाब से नेचुरल बना लिया है, एंगर को नेचुरल बना दिया है कि अगर कोई मुझसे बुरी तरीके से बात करेगा तो मेरा गुस्सा तो जायज है, मैं भी गुस्सा करूंगा. तो फिर आप में और उसमें क्या फर्क रहा? If you want a better world, if you want your relationships to be better, then why can't we be the first one to make that choice? All right. And this is when we start practicing mindfulness,
This is the power you get from doing that, because your awareness, you take the charge by raising your awareness towards yourself, your emotions, and you choose to say no. वो उनका तरीका है, उनके वैल्यूज हैं, this is not me. Okay, now let's turn. So this is what is mindfulness is about in a nutshell. All right, now can you imagine, अगर उस चीज को, this picture, right, just think about it. इनमें से हर एक को क्लोजली देखें, एक एक को, इनके प्रोफेशंस को आइडेंटिफाई करें और फिर सोचें कि अगर उस क्लटर्ड माइंड के साथ, जस्ट लुक एट दैट पिक्चर, रिकॉल दैट पिक्चर दैट आई शोड यू इन द फर्स्ट व्हेन वी स्टार्टेड दिस डिस्कशन, उस पिक्चर को रिलेट करें इनके साथ. इफ देयर माइंड्स आर माइंड FULL, नॉट माइंड FUL, बट माइंड full, 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 like the picture, what can be the consequences, right? So a teacher, जब वो अपने बैगेज के साथ क्लासरूम में एंटर करती हैं, तो थोड़ा सा भी वो बच्चे जो इस वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, और वो किससे सीख रहे हैं? एक अडल्ट इन द क्लासरूम, राइट? वो एक अडल्ट इन द क्लासरूम से सीख रहे हैं, जिसको वो रोल मॉडल देख रहे हैं. और जब वो अडल्ट ही अपने इमोशंस को कंट्रोल में ना करते हुए इज रिएक्टिंग रादर देन रिस्पॉन्डिंग टू अ चाइल्ड्स क्वेश्चन और समथिंग, जस्ट बिकॉज कि दिमाग में इतनी चीजें चल रही हैं, सम डेज आर नॉट वेरी गुड, सम डेज आर वेरी गुड. सो जब वो आते हैं सुबह में, अगर स्टार्ट ऑफ द डे उनका घर पे अच्छा नहीं हुआ, लड़ाई करके निकले हैं अपने हस्बैंड के साथ, या कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, या के बच्चों ने कुछ सुना नहीं, एंड दे आर कैरिंग दैट विद देम, वो सिचुएशन चली गई, राइट? Now is the present moment. Let go of that situation. Now concentrate in the class on your students. वो चलेगी, अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है. And this is what happens. We keep on thinking and rewinding and rewinding and rewinding and forwarding. हम rewind और forward का बटन तो दबाना जानते हैं, हम pause का बटन नहीं जानते. This is what mindfulness is about. Putting on the pause button. कि इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है. ब्रिंग योर फोकस इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड यू विल सी कि आप हर सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना सीख जाएंगे. ठीक है? सो इमेजिन एक वकील अगर उधर सुन तो रहे हैं, देखें लिसनिंग जो होती है ना, वो एक स्किल है जो डेवलप करनी पड़ती. हियरिंग हम सब पैदा होते हैं, अल्लाह माफी दे, कोई डिफेक्ट हो, कोई डिसेबिलिटी है और हियरिंग में कुछ मसला, वो एक अलग चीज है. बट हियरिंग वी आर ऑल बोर्न विद. और जहां तक बात है इसकी हमारी लिसनिंग स्किल्स की, वो डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑलराइट? सो द थिंग इज कि अगर वो ये सुन नहीं रहे हैं कि हो क्या रहा है, कैन यू इमेजिन व्हाट ब्लंडर्स कैन ही मेक व्हाइल गिविंग अ जजमेंट, राइट? सेम फॉर द आर्मी ऑफिसर, सेम फॉर द डॉक्टर. सो यू हैव टू, और इनके इतने traumatizing experiences होते हैं that if they don't let go of what happened and just concentrate कि okay, I did my best what I could in that moment, in that time, जो मेरी knowledge थी, जो कुछ था, अगर वो उसको आगे लेके जाएंगे, it will not only what do you say, उनका balance out करेंगे उसमें confidence level में, उनकी practice में, वो अपने आप को भी बहुत, उनका self esteem भी low होता रहेगा. So the thing is, you always have to be thinking in the present moment. Give yourself credit for what you can achieve in the present moment. All right. Now, can we have a second? Can we change the slide? So, like we just discussed, मैंने आपको थोड़ा सा ये बता भी दिया. These points you can read. Basically, first and the foremost is your attention. Always bring attention to the present moment. All right. कभी भी आपका माइंड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ब्रिंग इट बैक एंड ब्रिंग इट्स फोकस बैक, एंड दिस टेक्स अ लॉट ऑफ सेल्फ टॉक. तो वो एक प्रैक्टिस है, लाइक वी जस्ट सेड. जैसे जिम में जाते हैं आप, रोज डंबल उठाते हैं, तब आपकी मसल्स बनती हैं. इट्स द सेम थिंग. यू हैव टू कीप ऑन सेल्फ टॉकिंग टू योरसेल्फ एंड मेकिंग यू रियलाइज कि जी ये पॉइंट, अभी ये मैं घर की चीज या वो फला जो गुजर गया उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ, इस वक्त मैं सिर्फ इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी. लेटर ऑन आई विल गो एंड रिफ्लेक्ट ऑन द थिंग्स दैट वेंट, वेदर गुड और बैड. रिफ्लेक्शन इज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इंटेंशन, अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं. यू हैव टू
you have to have that intention. जैसे हमारा जब intention होता है कि हमें फला किस्म की फिगर चाहिए और हम उसके लिए डाइट भी फॉलो करेंगे, उसके लिए हम एक्सरसाइज भी करेंगे, आपका इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए. इफ योर इंटेंशन इज योर वेल बीइंग, is your having beautiful relationships with your children, with your spouse, with your colleagues, then you have to have that kind of mindset, and you have to have that commitment to yourself. Okay, then presence is all the same thing, being in the moment. All right, and openness, please be open. It's okay to feel anger. It's okay to उसको डिनाई नहीं करना है, बट उसको ये समझे इट्स जस्ट अ फीलिंग, इट्स टेम्पररी. हर मिनट पे हमें उसी वक्त रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है. दिस इज अनदर थिंग दैट वी मेक अ मिस्टेक विद. हम समझते हैं कि उसी पॉइंट पे अगर हमने किसी को जवाब दे दिया तो जी मेरी जीत. अगर मैंने सोच के उसको दूसरे दिन कुछ बोला और मे बी उसका और भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है, लेकिन हमें वो नहीं करना, बिकॉज हम उसने जवाब दिया तो मुझे जवाब देना ही है. बिकॉज वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी ऑलवेज वॉन्ट टू reply. So that is something that we also need to work on. ठीक है जी? All right, let's change the slide. These are few tips. We are short of time. There's so much to discuss about, but however, I've tried to make the points that are very, very important and would help you in this short span of the talk session that we are having with you. Okay, so this is what it is. When you have your attention in place, आपका presence, आपका intention, आपकी openness, वो lead करती है towards mindfulness. Alright, simply put, this is what it is. इतना सकून हो जाएगा, आप वही इंसान रहेंगे, मगर सिर्फ आपके तरीका, आपकी रोजमर्रा की सिचुएशन, चैलेंजेस को चेंज करने का फेस करने का वो चीज बदल जाएगी, तो यू विल बी एबल टू गिव यू 100%. Alright, this is what mindfulness look like. Mindfulness, stimulus is any situation or challenge. आप विदाउट माइंडफुलनेस करेंगे, आप रिएक्टिव ही होंगे. ऑलवेज यू विल बी रिएक्टिव बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग दैट. इट इज अ कॉन्शियस प्रैक्टिस दैट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू have a response rather than reaction. It takes time, it builds on it. ठीक है, जैसे आहिस्ता आहिस्ता आप जिम जाते हैं and you start transforming your body, similarly the patterns that you have learned over a period of time, आप उसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप अनलर्न करेंगे, and there will be new ways that you will be focused on, which will be very positive. All right, so now move on to the benefits of mindfulness. So अगर हम टीचर्स पर्सपेक्टिव से बात करें, like I said that this was basically I have a larger group of teachers, so I thought कि अगर मैं उस point of view से बात करूं, मगर ये कोई भी situation में, किसी भी relationship में very applicable है. इधर मैं teachers point of view से बात कर रही हूँ, मगर वैसे आप इसी चीज को उठा के किसी भी relationship में रख दें, this is how it will work. So benefits, if you can all just go through it. I think it's very clear and readable, right? If it's not, please put on your question so I can. Oh, that's very good. ठीक है जी. I think I missed the slide. Start with yourself. Yes. Can we have? Thank you so much, Saima, for that. I missed mine over there. This is as simple as taking out 5 minutes of time from your daily routine. ठीक है जी. और इसको अपने उसमें डालें. अगर आप अपनी बॉडी पे वर्क कर सकते हैं घंटों घंटों, ठीक है जी, तो 5 मिनट निकालना कोई मुश्किल नहीं है. दिस इज योर चॉइस. दिस इज बेसिकली योर चॉइस. इफ यू वांट to have good relationships, if you want to have that state of mind where you are not stressed all the time, तो ये चीज आपको अपनी डेली रूटीन में सिर्फ 5 मिनट निकालनी पड़ेगी. Right? So with that, we come to the end of our discussion. Thank you so much for being here, whoever could. And if there was this connectivity issue, I apologize for that. However, we wanted to make this
as lively and as fruitful and as helpful as possible. So thank you so much for being with us. Inshallah, we'll see you next time. Take care. Allah Hafiz.